अरे कर दो स्टार्ट। नेट खत्म हो जाना है।
We are going to start 3, 2, 1, go. हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए ही आ जाते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। Hello everyone, किद्दां जी? It's really very pleasing to greet you all, but a part of me yearns for greeting you all in real. Anyway, keeping up with emotions. At the very first, I wish you all a very happy, beautiful, and pious Navratri. Now remember how we used to chirp of our every joy and sorrow? But now, we the free birds are all caged up. But friends, are we all caged up for mere defending? Ah, certainly not. We are all caged up for feathering up our own wings to show how colorful we are, to color the sky with our navrangs, and to wear our own colors. So today, we, the Ratnas of Commerce Department, have come forward to show and wear our own colors and to show our colorful wings. So welcome to Navrang, wearing our own colors. A very hearty welcome to Madam Shalu Batra, a very cheerful and dynamic personality, co-dean and head of Department of Economics, who will formally inaugurate this event. A very hearty welcome, ma'am. Before beginning our program, I would like to express my profound indebtedness to respected and revered Principal Ma'am, Dr. Professor Ajay Siri, respected Department of Commerce and Management, Dr. Kavaldeep Kaur, and our very own and our very beautiful teacher in charge of Commerce Club of Commerce and Management, Mrs. Pino Gupta ma'am, for letting the young minds come forward and to show the fire within them. Really thankful to all of them. I heartily welcome and I feel pleased to welcome our lovely teachers present with us today. I heartily welcome Kanika ma'am, Yuvika ma'am, Navroop ma'am, Dr. Seema Khanna ma'am, Meenu Kundra ma'am, and all other teachers present with us. I heartily welcome Savita Mahindru ma'am for raising the grace of this occasion with their presence. Whenever I hear this, it hits me deep. I say it hits me deep whenever I hear अष्टविनायक गणपति दुख हरता सुखदाता निष्ठा लगन से रहेगा अवतारक गाना. Shivers the soul, right? So now let us begin our event by seeking the blessings of Almighty. So here comes Riddhi Chawla worshipping the handmade idol of Shri Ganesh Ji. So here comes Riddhi Chawla. Gloria,
beautiful Ganesh Vandana it was, really commendable. As it's been a custom of we, the DAVians, to sing the DAV Gan at the commencement of every event, so following our rich legacy, here we go with the DAV Gan. विरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय Now I request our ever shining, our ever beautiful teacher to whom we ever rush for our scholarships. I would like to request Madam Shalu Batra to address the students and to give her blessings to them for new beginnings. So please welcome Shalu Batra ma'am. Thank you, Radhika. Respected Madam Principal, Madam Binu, and all the teachers of Commerce Department and Head of the Department, Madam Kamaldi, and my dear students, a very good morning to all of you. It's indeed my privilege to inaugurate this function. I'm thankful to Madam Binu for giving me this opportunity. बेटा मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल लाइफ में जब भी आपने आगे बढ़ना है तो आपकी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. इट्स मस्ट दैट यू शुड एक्सेल इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट. और हमारे कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट हमारा, और कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे हमेशा ही बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज भी करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं. और ये मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चों ने ना सिर्फ हमारे कॉलेज में बल्कि बाहर कई जगह पे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे जो है इनाम जीते हैं. और ये बताता है कि हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं. ना सिर्फ एचएमवी के बच्चे और कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं. और ये अभी हमें रिद्धि की गणपति जी की मूर्ति बनाने से भी पता चल गया. इट वाज एक्सीलेंट. रिद्धि आपने बहुत अच्छी बनाई बेटा. और मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि आज का जो आपका फंक्शन है नव रंग, ये कुछ नए रंग लेके आएगा और इसमें आप डेफिनेटली कुछ नया जो है आप दिखाओगे, जो कि ना सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि कुछ नए मैसेज भी लेके आएगा, जैसे कि ये हमेशा लेके आता है. इसलिए मैं डेफिनेटली आपकी जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है हमारा हमेशा एक्सेल कर रहा है अंडर द मोटिवेशन ऑफ आवर मैडम प्रिंसिपल, under the guidance of our head of the Department of Commerce and our able teachers, Charge Commerce Club and other teachers.
So not taking much time, I will definitely congratulate all of you and give my best wishes for this function, and I will definitely hope that this function will be a ग्रैंड सक्सेस। और ये सबके लिए जो है कुछ नया लेके आएगा, नाम से ही लग रहा है कि नवरंग है और सबके लिए कुछ नया लेके आने वाला है। और मुझे लगता है कि हम इस फंक्शन से बहुत कुछ जो है इसमें से हमें मिलने वाला है, ना सिर्फ जो आपकी एंटरटेनमेंट बल्कि बहुत सारी जो है नए मैसेजेस, जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे हमेशा ही हमारे लिए लेके आते हैं, तो इसमें भी हमें कुछ नया जो है लेके आएंगे और कुछ नए जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या उनके साथ रिलेटेड जो है आपकी ये कल्चरल एक्टिविटीज रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट बेटा, all the best and God bless you all, and I hope that now you will soon start the function and not taking much time to wind up here. All the best beta. एक म्यूट म्यूट। राधिका माइक आपका म्यूट है। Thank you so much, ma'am, for sharing such golden words with us. Your words and love is everything that we yearn for. It is because of your love that we, the commerce students, shine so brightly everywhere. And I promise that we will bring new colors of happiness in this Navrang. I assure you that, ma'am. So girls, how's the Josh? We are about to begin with our event. ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੋ, ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਅੰਬਰ ਵੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭ ਲੋਕੋ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭ ਲੋਕੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਨਵੀ ਵਰਮਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਤਨਵੀ ਵਰਮਾ। मोटे मोटे नैन जट्टी दे हुंदे चरचे रहन जट्टी दे नाजुक मोटे मोटे नैन जट्टी दे हुंदे चरचे रहन जट्टी दे नाजुक लक ते भारियां मड़कां महंगे इधर ना महकन सड़कां पौंदी सूट सवा के काले रोले छिड़के लग गए ताले भरी जवानी उत्तों लड़ी किथे दबदी है पंजाबन पंजाबन ठेठ पंजाबन ठेठ पंजाबन लगदी है कुड़ी ठेठ पंजाबन लगदी है ठेठ पंजाबन लगदी है कुड़ी ठेठ पंजाबन लगदी है निकल लगदा सी कथे विच कौन करके जट्टी बोलना चंदी सी ओदे सिर चढ़ के कौन करके जट्टी बोलना चंदी सी अद सिर चढ़ के नी मैं भी अज रेत के जवानी थरी ते चौका इश्क दी पट्टी विच चौकता सिखरे तो तारे डांग मारेगा शकीन बिल्ली अख ना चुराहे विच ठोकता सिखरे तो तारे डांग मारेगा शकीन बिल्ली अख ना चुराहे विच ठोकता। Wow, Tanvi, your performance was really a treat to watch. See, I can see those so many hearts. Amazing Tanvi, awesome Tanvi. Students are writing you in chat box. So it was really a beautiful performance. There's no thing that suits the soul the way music does. Music is truly the voice of soul. So for the next performance, we have Ritambra to sing a melodious song for all of us. So please put your hands together for Ritambra. सूरी पैरी ना पूरी जुत्ती कसूरी
जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया जीना रहा दी मैं सारी ना जाना जीना रहा दी मैं सारी ना जाना ओनी राही वे सानू मुड़ना पिया ओनी राही वे सानू मुड़ना पिया सारे पिंड दिया लम्मिया बाटा बड़ा पवाड़ा बह गया है यक्का ते पाड़ा कोई न कीता माइया पैदल ले गया है माइया पैदल ले गया हाय रब्बा वे सानू तुरना पिया Wow, Rutamka, it was such a soothing performance. Everyone loved your performance. See, I can read it. Beautiful voice, so soothing, professional singer. Really commendable. It was awesome. Old as gold. सुना तो हम सब नहीं होगा, तो आइए आज देख भी लेते हैं। तो आप सबके सामने रेट्रो लिप सिंकिंग की कुछ वीडियोस लेके आ रही है अंजलि। So please give a huge round of applause for Anjali. जब आना बिंदिया तुम ही बन जाना ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे याद रखोगे जिधर देखती हूँ उधर तुम हो न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में तुम मेरे हो तुम मेरे हो आज तुम इतना वादा करते जाना चुरा लिया है तुम अरे जाने हट लटपट ना छूट मेरा घूंघट लटके दूंगी आज तुझे गाली रे मुझे समझो ना तुम भोली भाली Whoa, so much of love, so many hearts. It's like a tree, two eyes, old as gold, so true. Hi, Mardala. It was such a pretty, beautiful performance, Anjali. सुंदर बना दो ये जहां अपनी अंदर की सुंदरता से सुंदर बना दो ये जहां अपनी अंदर की सुंदरता से रंग दो इस आसमां को मैं रंग दो इस आसमां को मैं खुद के ही रंगों से So here comes Yukti Dhiman, pretty inside, pretty outside, to show her colors with her beautiful paintings. So please put your hands together for Yukti Dhiman's painting. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, so on these lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, so on these lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say I love you, baby.
Yukti, this painting was as beautiful as you are. ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ यार क्यों ख्यालों को लफ्जों में बुनना भी एक कला है। ख्यालों को लफ्जों में बुनना भी एक कला है। सारी दुनिया की कश्मकश छुपा रखी हो जिसने, ये वो हमराज है। So, penning her emotions out for the next performance, we have Parampreet Kaur with her heart-melting poetry. So please put your hands together for Parampreet Kaur. एक कुब्बा हो रहा है मेहनती हाथ सी ना दा जे बुढ़ा हो रहा है एक कुब्बा हो रहा है मेहनती हाथ सी ना दा जेड़ा वो अज किधरे मुंह गया है थर थर कंबते बुल इना बुल्ला नु नीर ला दे तू होरा वर्गा नहीं इस दुनिया नु दिखा दे तू होरा वर्गा नहीं इस दुनिया नु दिखा दे मापे घरों कड्ढने दी रीत जिस भैड़े ने चलाई है उन्हां दे खिलाफ रब भी ते खिलाफ सारी खुदाई है बिरध आश्रमां दे विच ए सिमरे किथे धक्के खावणगे तू ये कहर ना कमावी नहीं ते रोंदे जग तो जावणगे जे तैनू राजियां दे वांग रखिया है तू ही बादशाह इन्हां नू बना दे तू होरां वर्गा नहीं दुनिया नू अज दिखा दे तू होरा वर्गा नहीं दुनिया नू अज दिखा दे जो तेरे मुंह च चोरियां पाउंदी सी तेनू गोदी दा निग दवाउंदी सी कल्ला ही नहीं सी रोंदा तेरे रोने विच आप भी तां रोंदी सी अज ओ किते कल्ली रोवे ना ओदियां अखां चों नीर चोवे ना जो तू रूखी मिस्सी खाना है ओही ओनू खवा दे तू होरा वर्गा नहीं दुनिया नू अज दिखा दे तू होरा वर्गा नहीं क्या बात है परम, it was such a heart-melting poetry. I really loved it. ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। So for the next performance, we welcome Jaspreet Kaur with her Bhangra and Gidda performance. So please put your hands together for Jaspreet Kaur.
Wow, Jaspreet, it was such a beautiful performance. See, I can read. Wow, Jaspreet, great Jaspreet, energetic one, awesome. It was really so beautiful to watch you dancing. So for the next performance, we have Jasmine to show up her sketching skills, and at the same time, she will be entertaining you with her TikTok videos. So please give a huge round of applause and welcome Jasmine. पागल है क्या? कितनी गंवार सी बहन है तेरी। ओए चुड़ैल, तू गंवार, तेरी बहन गंवार और तेरा खानदान गंवार। मेरी बहन गंवार नहीं है, जानवर है। ਬਈ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ कीप डिस्टेंस ब्रो। हिंदी मेरे से 1 फीट दूर रहो। पंजाबी और परा पर मैनू कोरोना कोरोना ही दूर होके आ खुदाया क्या नजारे तेनू तकिए तुझे खलोगे। Wow, Jasmine, it was so beautiful. I heartily welcome Shifali ma'am, Manpreet ma'am, and Seema Khanna ma'am for raising this occasion, for raising its grace with your due presence. Thank you, ma'am. When you rejoice, you smile, but when your soul rejoices, you sing. So for the next performance, we have Manpreet Kaur to sing a melodious and heart-melting song for all of us. So please welcome Manpreet with a huge round of applause. वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में जो तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में जो तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। Thank you. So sweet and sugary. Your voice was, Manpreet. It was really beautiful to listen this beautiful song from you. So, there is no dance form that hit the Punjabis the way Bhangra does. So to make your body move in joy, for the next performance, we have Bhangra by Jaspreet. So please put your hands together for Jaspreet Kaur. Dinesh Loharu and Remix. Papa
Hearing this, my heart says, "Hi, कितना सोना भंगड़ा सी." How quickly did the time fly from reciting "Twinkle, twinkle, little stars" to composing some pieces that our heart writes. We all have come actually a way too far. So, to open her heart out for the next performance, we have Simran with her poetry. So, please welcome Simran with a huge round of applause. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੇਮਤਲਬੀ ਫਿਕਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਫਿਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਫਿਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਨਾ ਛੂ ਮੈਂ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਨਾ ਛੂ ਮੈਂ ਸਕਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਏ, ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Wow, Simran, it was so beautiful. I really enjoyed it. Fantabulous, that I would say. So now, my friends, I must have an activity with all of you. I'll say a tongue twister and you have to speak it 5 times. Will you do that? Please unmute one by one and say yes if you agree. Yes. 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 So all of you please unmute and I'll say after that you repeat. Radhika, you are unmuted. You have muted yourself. If anyone has any query or would like to say anything, please raise your hand in the chat section. I'll read it. So here's the tongue twister. If anyone will speak, I'll announce his or her name. I wish to wish you the wish you wish to, but if you wish the witch's wish, then I'll not wish you the wish you wish to wish. I repeat, I wish to wish you the wish you wish to, but if you wish the witch's wish, then I'll not wish you the wish you wish to wish. Now who wants Can you to repeat try? once? Come on. Can you repeat once? Write in the comment section. I wish to wish. Was it so funny? Everyone, please try it. Okay, so I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish to wish. Wow, Republic, it was such a big performance, you know. Trying for the first time, it's really very hard. I appreciate. Anyone next? I'll repeat for you. I wish to wish you the wish you wish to, but if you wish the witch's wish, then I'll not wish you the wish you wish to wish.
Hello everyone, can you listen? Please try. May I? Hanji, sure. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Wow, Riddhi. Aditi. Aditi. I'm sorry, Aditi, it was very good. Like trying for the first time and saying so beautifully, it's fantabulous. So now I have an activity for all of you. You will have to send a message up for the event that has been done up to now. Like you will have to say anything, giving a message for this event which we have done up till now. And the best message will be read now. Like it could be any suggestion, comment, your love, or anything else you would like to say. Please buzz this chat box with your love, comments, and suggestions. Keep trying. So I can read here. There's a good thing for me by Tanvi. Thank you so much, Tanvi. Then we have stunning performances by all. And Radhika, you really do a fab job. Thank you. The whole function was too fantabulous and I loved all the performances. So see guys, you did really well. Everyone enjoyed it. Thank you for all the love that you are showing to me as well. Yes. So Namrata is saying she is proud to be a part of the Commerce Club. Everyone present here is similarly very proud of being a commerce student. Yes, Komalpreet, surely I would be keeping your energy levels at very high as long as I can. I assure you that. Thank you, Aditi. Any suggestions that you would like to say, please keep it in the chat box. Like any suggestions for the better performance next time. So here we have a comment from Anshu Vich. A wonderful program and good anchoring makes me energetic again in lockdown. It's same with everyone, Anshu. So here we end up with our taking some chats from the chat box. Now let me ask you some gentle questions. What is the significance of colors, say red, green, yellow? Not as in like what others say, but what you think, how it's significant for you, in what way, how you can relate this color to something very auspicious, something very memorable. So please text it. It could be any color, even black. I love black. It is so close to me. So any color you like, keep it in the chat box and keep texting how you like it, how it create memories for you. So, a team that has got the best guide and the best leader shines so brightly, and we shine because of the epitome of
elegance, sincerity, and hard work we all have in the form of our dear Madam Principal, Dr. Professor Mrs. Ajay Siri. I heartily welcome you, ma'am, in this event. It's truly a blessing to get every little word, every little blessing that we can from you. So, on the behalf of whole Commerce Club, I extend a hearty welcome to you, ma'am, to bless us with your words of wisdom, golden rich words. Welcome, ma'am. Huh? Video off है. Girls, get ready to get the rich words, अब हो गई on. words from ma'am. A hearty welcome, ma'am. Thank you. Ma'am, voice is audible. Ma'am, voice is audible. Yes, ma'am. Hello, Vidu. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Right, right. Sure, ma'am. Definitely, dear students, it is going to be a proud moment for me to be talking to you, all of you, to be addressing all of you. Let me first of all apologize because I could not join in the beginning as I was held up somewhere else. If you know that this week is being celebrated by DAV College Managing Committee as Anand Parv. बच्चे अगर आपने अपने यहाँ कैंपस में एंट्रेंस के पास 3 स्टैचूज देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक स्टैचू जो है वो महात्मा हंसराज जी का है जिनके नाम पे हमारा ये कॉलेज है। दूसरा स्टैचू स्वामी दयानंद जी का है जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं और तीसरा स्टैचू जो है वो महात्मा आनंद स्वामी जी का है जो कि एक बहुत बड़े आर्य समाज के लीडर हुए हैं और हमारे प्रधान आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी के वो ग्रैंडफादर रहे हैं। सो ये हफ्ता जो है वो आनंद पर्व के नाम से मनाया जा रहा है। सो आई वाज हेल्ड अप इन दैट वेबिनार व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन रिगार्ड टू दैट। सो आई एम सॉरी दैट आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ दिस फंक्शन। एक बार कैन आई रिक्वेस्ट कि अपने सारे वीडियोस ऑन कर लो ताकि एनर्जी से भरे हुए चेहरे जो हैं वो एक बार नजर आ जाए मुझे सुबह सुबह। थैंक यू बच्चों, एक बार अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो so that I am able to see those faces filled with energy and positivity. Thank you so much. Thank you. Please, others also. Thank you. Oh, that's wonderful. I understand that this program has been the brainchild of Madam Binu. Binu is, if I say so, that she is a real asset to the Commerce Department and children adore her like their mentor, their philosopher, their guide. So congratulations, Binu, for having achieved this status in your teaching career. It is all because of your sincerity and your dedication that you have a long list of students who are not only your fans, who are your followers, and who place you at an altar of that of a mentor. So congratulations to you for having achieved this platform. बच्चे, आज का ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करा है, मैं थोड़ा सा ही देख पाई हूँ कि एक प्लेन शीट, हम लोग कहते हैं ना कि लाइफ इज
टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू डेली। रोज एक परमात्मा हमें एक कैनवस देता है, एक प्लेन शीट देता है, और ये हमारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या कलर्स भरते हैं। I always say that you are blessed कि वो परमपिता परमात्मा जो है रोज आपको नए दिन के तौर पर एक कैनवस दे रहा है। It is your creativity, it is your ability कि आप उसमें एक रंग भरते हो, 2 भरते हो, 3 भरते हो, उसको मल्टी कलर्ड बनाते हो, या आपको एक ही रंग इतना प्यारा है कि आप उसी के साथ अपनी ड्राइंग कंप्लीट करना चाहते हो। लेकिन वो ड्राइंग कैसी होगी, वो ड्राइंग कितनी खूबसूरत होगी, वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन देगी, वो लोगों से आपको कितनी अप्रिसिएशन दिलाएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मैं फोटोग्राफी की अगर बात करूं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कलर्ड फोटोग्राफी कैप्चर नहीं कर पाती जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में आ जाती। लेकिन इसका उल्टा भी है कि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट देखते देखते थक जाते हैं तो हम कलर्स में जाना चाहते हैं। सो लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ this package that sometimes there is only gray area, sometimes there is white area, sunlight is there, and sometimes we get satisfaction only when we have the bright colors. This exactly applies to our life. This exactly applies to the period through which we are going on right now. अगर आप ये कोविड-19 वाला पीरियड देखो तो शुरू के दिनों में मुझे लगता है हम सारे शेफ्स बन गए थे, हम सारे कुक्स बन गए थे, एंड ईच वन ऑफ यू नो वी गेन्ड फ्यू kgs, है ना? एंड देन केम अ पीरियड ऑफ रियलाइजेशन, नो आई वांट टू गेट बैक टू माय शेप, एंड हमने अपनी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बट देन कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर से हमें लगा कि जिंदगी में कुछ रोशनी, कुछ रंग होने चाहिए, और ये फेस्टिवल सीजन जो शुरू हुआ है ये उस कमी को पूरा कर रहा। सिमिलर इज द केस विद योर लाइफ टू। जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर दिन वो बराबर का दिन नहीं होता। किसी दिन हमें सनशाइन बहुत अच्छी गर्माहट भी देती है, और किसी दिन वही सनशाइन हमें पसीने से सरोबर भी कर देती है। So let us take this as a full package, एक ऐसा पैकेज जो हमें उस परमपिता परमात्मा की तरफ से मिलता है, एक ऐसा पैकेज जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम जिंदगी को और बेहतर बना सके। So let us fill our life with all colors, and let us understand the importance of each color in our life. कुछ मौके ऐसे होंगे कि जहां पर आपको सफेद रंग ही सुलेस देगा, कुछ मौके ऐसे होंगे जहां पर आपको रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ही अच्छा लगेगा, रंग बिरंगी झंडियां लगाए हुए ही अच्छा लगेगा। So let us acknowledge, let us give full weightage to every color in your life. ये कलर्स सिर्फ रंगों के कलर्स नहीं है, ये कलर्स आपकी जिंदगी की अलग अलग पड़ाव है। किसी पड़ाव में आपको क्या करना है वो प्रायोरिटी आपकी है। किसी पड़ाव में जाकर कौन सी चीज आपको सेटिस्फेक्शन देगी ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा। एंड let me once again congratulate PG Department of Commerce for taking this initiative of filling the canvas of our life with so many bright and varied colors. ये भी मान के चलना कि जैसे उस परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ एक शख्स दूसरे के साथ मेल नहीं खाता, उसी तरह से हमारी बनाई हुई कलाकृतियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हर एक बच्चे में, हर एक इंडिविजुअल में एक अपनी क्रिएटिविटी है, एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। ठीक उसी तरह से आप सारे बच्चों को सेम इंग्रेडिएंट्स दे दीजिए, लेकिन उससे बनने वाली डिश जो है वो डिफरेंट स्वाद लेकर आएगी। उसका नाम तो सेम हो सकता है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो हर एक का डिफरेंट होगा।
आप क्लास में एक लेक्चर सुनते हैं टीचर्स का, लेकिन जब आप उसका आंसर लिखते हैं तो हर एक का प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन ओनली दोज आर कंसिडर्ड द बेस्ट जिनका तरीका सबसे नायाब होता है। एंड that is why there is a famous quote by Shiv Kheda that winners do not do different things, they do things differently. So मैं अपनी बात को इसी कोटेशन के साथ खत्म करूंगी कि आपने जो कलर्स के साथ कलाकृतियां बनानी है, जो पिक्चर्स बनानी है, जो कैनवस को आपने रंग देने हैं, वो रंग जो हैं वो आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो रंग जो हैं आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, और जो इस कैपेबिलिटी में एक्सेल करेगा वही डिफरेंट होगा, वही जिंदगी में विनर होगा। So let us all pledge that we will do differently, we will perform differently so that we emerge as winners. Is that fine, dear students? Is that fine? आप अपने हाथ खड़े करके अपना yes कह सकते हैं। Yes, Anshu, Tanvi, I can see you. With a thumbs up sign, we can say, yes, we will do the things differently, ताकि हम जिंदगी में winners बने, ताकि हम जिंदगी में innovators बने, ताकि जिंदगी में सारी मंजिलों को हम हासिल कर सकें। इसी तरह की एक मंजिल जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट, बीनू मैम को भेजो, इसी तरह की एक मंजिल जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने आज और अचीव करी है, जब इनका आपका जो मैगजीन है कॉमर्स इनसाइट, उसका वॉल्यूम 5 जो है आज हम रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। ये भी ऑनलाइन रिलीज हो रहा है और मैं इसको बहुत प्राउड फीलिंग के साथ आपके सामने रिलीज कर रही हूँ। दिस इज कॉमर्स इनसाइट वॉल्यूम 5 1920। ये इसका फ्रंट पेज है और ये इसका बैक पेज है। विदु बैक पेज ले आओ। यस, थैंक यू। और ये उन्हीं सारी बेटियों की, उन्हीं सारे बच्चों की पिक्चर्स जो हैं इस पर लगाई गई हैं जिनको कि हम आवर प्राइड के नाम से जानते हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारा प्राइड कौन होगा, जो डिफरेंट बिहेव करेगा, जो डिफरेंटली इनोवेटिवली काम करेगा, so that we all become winners. So in the end, once again, I congratulate PG Department of Commerce headed by Dr. Kamaldeep, and especially from this platform, I acknowledge, I appreciate the efforts made by Madam Binu in making this program so wonderful, so colorful, so different. And my heartfelt gratitude to all the faculty members, to all the students who have participated in this program. Thank you, God bless you, and have a very creative, fulfilling day ahead. Thank you, Vidu. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Thank you so much, ma'am. Your words of wisdom are always a treasure to all of us. We assure you that we will always carry it with us for lifelong. As you said, that every day is a plain sheet and it depends on us of which color we paint it in. So we assure you and we promise you that we will make it a very colorful, a very beautiful one. So as we know, old is gold. सुना तो आप सबने ही होगा, तो आइए आज देख भी लेते हैं। तो आप सबके सामने रेट्रो लिप सिंकिंग की कुछ वीडियोस लेके आ रही है अंजलि। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अंजलि। जब आना बिंदिया तुम ही बन जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम,
বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में गुजर न जाए ये दिन कहीं से तमन्ना में तुम मेरे हो तुम मेरे हो आज तुम इतना वादा करके जाना चुरा लिया है तुम अरे जाने हट लटखट ना छोड़ मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे मुझे समझो ना तुम भोली भाली Wow, Anjali, what a fantabulous performance it was. Everyone really enjoyed it a lot. Now, to make this event even more colorful and to make it light, for the next performance, we have Namrata Arora with her lip syncing videos. So please put your hands together and welcome Namrata Arora's videos. ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਇਗਨੋਰ तो बच्चों बताओ स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था स्कूल से सीधे घर आना Fantabulous, that I would say. It was so good to watch you, Namrata. There is nothing more exciting, there is nothing more refreshing than two colors, two cultures, and two philosophies coming together at one place in unison. So for the next performance, we have Suman with her combined Bhangra and Western dance performance. So please put your hands together and give a huge round of applause for Suman. ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਤੇਥੋਂ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਗਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੈਣ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਬੇਲਾਰਿਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜੂ ਜਵਾਨੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਬੇਲਾਰਿਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜੂ ਜਵਾਨੀ ਮੁਟਿਆਰ एक कोने में तो बैठा जब मुझे वो दिखी थी वो सबसे अलग थी वो सबसे हंसी आगे मेरी फिर उसकी आंखों से चमेली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा विच तुझ च गिलास ते मैनू नहीं पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी जग के पहुंचा तुरन वाली टाकी टाकी सुन वाली टेढ़ा टेढ़ा धक्के कास तोनी बस च पेस्टल रखे गास तो बस च पेस्टल रखे गास ओ तेरे उत्ते आया साडा दिल बदलो चल दोए करदे आ चल बदलो आओ बिगड़े ने जट वलो धन्नवाद नहीं मेरी जिंदगी नू जिंदगी बनाउण वास्ते आका दे मुंडे बारे मैनू सोचे दुनिया जट मेरा होया Wow, Suman, your performance was rocking. See, I can read so much of love for you. Oh ho, fantastic, Suman. Wow, so much of smileys, so many hearts. It was really a very beautiful performance. It was a treat to watch. Now, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦੀ 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 ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫੱਤੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਲੈਂਦੀ ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਲਾ ਸੈਂਦੀ ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਲਾ ਚਾਦਰਾ ਪੱਗ ਗੁਲਾਬੀ ਖੂਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਮੈਲ ਬਥੇਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ ਛੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਚਾਦਰੇ ਧੋਵੇ ਛੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਚਾਦਰੇ ਧੋਵੇ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦੂੰ
ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਨਣਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜਾਈ ਪਤੇ ਬਾਜ ਨਣਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜਾਈ ਪਤੇ ਬਾਜ ਨਣਦੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੱਕੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈ ਗਏ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈ ਗਏ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਵੀਣੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਵੀਣੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬਾਣ ਮੇਲਣਾ ਤੀਆਂ ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬਾਣ ਮੇਲਣਾ ਤੀਆਂ ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਵਾਓ ਸੁਮਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ there are so many comments for you wow Supan wow can't boliyan it was really a very good performance by you now whenever it comes to enjoyment we all seek for something very exciting so for the next performance we have Pallavi with her lip syncing videos so please put your hands together for Pallavi ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦਾ ਐ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣੇ ਦਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸੀਸ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਗਏ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਦ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਯਾਰ ਕਾਨੇ ਸਿਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਣੀ ਯਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਪਰਚੇ ਨੇ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੱਖ ਵੇ ਤੂੰ ਸੱਟ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ ਜੱਟ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਬਦਲੇ ਉਹ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਚੇ ਉੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਰਾਖੀ ਕਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਸਟਲ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰੀ ਚਿਗਰਾਰੀ ਹਨਰਾ क्या बात है Pallavi you rocked for the next performance we have a melodious lovely and sweet song in the voice of Aditi Rana so please welcome Aditi with a huge round of applause चेहरा नुरन कहीं दिल वाली बात बिना नव सजरे जवान कहीं जंग में थार जसाना कोई जग में थार जसाना ना तो हंसना रुना कहीं ना तो खुशबू सुहान कहीं ना तो रंगली अदाएं देखी ना तो प्यारी सी नदानी कहीं जैसा तू है वैसा रहना जग हूँ मैं थार जैसा ना कोई जग हूँ मैं थार जैसा ना कोई जग को मैं थार जैसा ना कोई जग हूँ मैं थार जैसा ना कोई Wow Aditi hearing this I feel like saying जग घूमे आया तारे जैसा ना कोई so for the next performance here we have a Punjabi folk dance and we know that whenever it comes to Punjabi folk dance the energy within us redoubles so ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਤਿਕਾ
ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਜਾਵੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਡਰਦਾ ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਜਾਵੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਡਰਦਾ Wow, Ritika, it was such a beautiful performance. Everyone loved it. See, I'll read. Wah wah, Punjaban, At Mutiyar. Everyone loved it. Everyone literally loved your performance. So, now here we have Uttampreet Kaur to sing a beautiful song for all of us. So here we welcome Uttampreet Kaur for a melodious and lovely song. मेरे जिगर दिया तेरे खाना गिल्ली लकड़ी दा चरखा बनाना इस चरखे नू खूब सजायो एदी खानाल जड़त जड़ायो नी सहेलियो मैं तुर चली नी मेरी अमड़ी तार गई कली एना पुनिया अमड़ी नु चुप करायो Hi, kitna sundar, kitna sundar. So, for the next performance, I would like to invite Republin with her heart-melting poetry. So here we are with Republin's poetry. Welcome to all. I feel proud and privileged to have got an opportunity to recite a poem. The title of my poem is Send a Drop of Kindness. It has been composed by Julie Hebert. Send a drop of kindness and see a happy face. A drop of kindness goes real far. It may even reach outer space. Send a drop of love and feel its loving embrace. It feels so good to feel like you are in the right place. Send a drop of hope, but be that shining star. Hope is wonderful to have, but sometimes we can't sit away so far. Send a drop of faith with a single prayer, and God will show the way, as faith is always there. And God will show the way, as faith is always there. Thank you. It was such a heart-melting poetry, Republin. Chocolate, ice cream, lime juice, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरी शौक है कहाँ? I'm pretty sure Bollywood surely excites you the way it does me. So hold your breath, girls, because for the next performance, we have Riddhi and Manvi for their Bollywood dance. So please put your hands together for Riddhi and Manvi. तो झाग लगेगी और जिस सांबर में ऐसे नाचेगी तो आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी Social media
Riddhi and Manvi, you literally took everyone's heart. It was seriously such a commendable performance. For the next, I would like to call Komal with her Shairi. So please welcome Komal with her huge round of applause for her Shairi. नफरत ना करियो किसे नाल, बस प्यार नाल ही रहना है। ये जिंदगी हैगी छोटी जी, हर पल नूं एक हसी खुशी नाल जीना है। कि इत्थे की तेरा कि इत्थे की मेरा, बस मेहनत नाल अगे वधना है। इज्जत करो सब दी, क्यों एक नफरत नाल आपां जीना है। विश्वास रखो उस रब ते जिहड़ा खुशियां बख्शदा है। जे आवे किते दुख तां यकीन रखियो अंधेरा ज्यादा देर ना टिकदा है। हिम्मत ते हौसला मन च जरूर रखियो, मंजिल मिलूगी जरूर, बस पैर ना पिछे कोई रखियो। अज नवरंग असीं सारिਆਂ ने जो तुहाडे सामने पेश करिया है, उम्मीद करदे हां तुहानूं सब नूं पसंद आया, क्योंकि हर एक ने अपने आप विच एक नवे रंग च सजाया है। साडे सारिਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ उम्मीद करते हैं एक सोहना जा हसी वाला खुशी वाला नवा रंग लिया है। धन्यवाद। Wow, Komal, seriously, very beautifully penned. Now, it's time to heartily welcome our very own, our very beautiful, and as Principal Ma'am said, an asset to our Commerce Club. Teacher in charge of Commerce Club of PT Department of Commerce and Management, I heartily welcome Mrs. Beenu Gupta ma'am to give a vote of thanks and to impress our lovely students. So please welcome Mrs. Beenu Gupta ma'am with a huge round of applause. Thank you, dear Radhika. I am here to present the vote of thanks on behalf of Commerce Club. It is my pious duty and I am thankful to Almighty that this duty is being given to me, because Thanksgiving is the most important part of the event. On one hand, we acknowledge the efforts, the hard work put in of everybody behind the successful event, and on the other, we also have a little hope and we encourage and motivate those students in order to meet the future endeavors. So this has both the aspects. Starting off, first and foremost, thanks. I would like to extend my gratitude to our inspiration, to our guidance support, to the catalyst, to the leader with dynamic vision, Madam Principal, Professor Dr. Mrs. Ajay Serene, who has shown her kind blessings by saying such words that I'm really speechless at the moment that what to say in order to thank her. Her positive response for the conduct of this cultural event by her verbal and non-verbal gestures both. When this event was being discussed with her, she showed with her gestures that yes, something very good she's expecting from the Commerce Club. And there was something in her eyes that she wanted that this event should be different and it should provide something extra value to all the students. And ma'am, I hope we have kept up to that level. This cultural show by Commerce Club by the dear students of BCom Sem 5 has paved way for integrating creativity on this online platform of WebEx. Our students, you all deserve hearty congratulations, because Navrang, wearing our own colors, no doubt it has infused a new spirit in all our minds. It has left an imprint
It has left your color upon us. And you have left us mesmerized, astonished with all your dazzling performances. I could still now also recall Riddhi making Ganesha, then dances of Jasprit, Suman, Ritika, Manvi, Riddhi, of course, Tanvi also. Singing performances by Ritambara, Banpreet, Uttampreet Kaur, and Aditi Rana. Lip syncing by Anjali, Namrata, Pallavi, and Jasmine. And something new, the painting depiction by Yukti and Jasmine, of course, really very good. Komalpreet, Simmi, Parampreet Kaur, you are the new poetesses, let me tell you. Very effective poetry. Republin, you recited the poem very well. And Supandeep, your Punjabi boliyan still echoing. The dance and all has really, and of course, one thing more, the tongue twister of Radhika. Everything has left this show. I think that for many years, these things are going to echo in your mind that distance, physical distance or no distance at all. If you really want to enjoy, you can enjoy by conducting an event on a platform like this also. If you want to have an emotional bonding, an emotional contact or connect with each other, you can do it like this also. So the purpose behind this conducting this event was 4 E's: envision, explore, e-connect, and emotional bonding. And I feel that we have been able to come up to these 4 E's level. Your envision, the way you have chalked out and designed the whole program, final year students, the whole team of Tanvi and Radhika, I'll not name all the students again, but you all were involved, and I'm very happy to see the overwhelming response by the participants, by the team. But yes, here I would like to have a special mention. I would like to specially mention dear Riddhi. You know, there has to be someone who makes a beginning. And it was Riddhi who in one of my income tax class, she said, "Excuse me, ma'am, I want to ask something." So I thought maybe an income tax doubt. So I said, okay, go ahead. What do you want to say? So she said, "Ma'am, can we have an event? We want to design. We want to celebrate in a new way. Can we do so?" I said, okay, we will be, but only after when I ask ma'am principal and Kamal ma'am also. Only after that, I will give you the green signal and you go ahead. And she was the one, Riddhi was the one who pioneered. And Riddhi, just see what your thought was. You know, small steps create big things. And this big thing, I think everybody in the chat box should acknowledge that her contribution in this event. I would like everybody to at least send clap messages or applaud messages for her, that, you know, to be a leader or to give a new shape or to start something new, it is very difficult because many people hesitate, many people don't join. But in earlier also in one of my just deliberations like this, I said, break, express, and excel. You know, break is you break the hesitation. You try to speak, you try to come up. And I am happy to see many students who never have come up on the stage of HMV in Ragini Auditorium. They were performing it like anything over here. They were doing wonders in this event. They were expressing effectively, they were communicating well, and of course, all these things will help you to excel in your future. You are doing well now, but you will be doing very well in future, I'm sure of it. Another special mention I would like to make of dear Radhika, her anchoring and conducting the whole event. And of course, you know, someone is there at my back. She is not visible. Ritika is there.
She is also managing the whole show very effectively, playing all the videos timely. And someone is there on my right side. I would like to thank him. Sir, we acknowledge all the technical support you have rendered. I'm talking of Mr. Vidhu Vora. You have rendered very effective technical support in today's session and also in the rehearsals the students have been doing for the past 2 days. So I thank you once again. So in nutshell, the contribution of each and everybody from faculty members to the head of the Department of Commerce, to the head of the institution, to my dear students, all is praiseworthy and noteworthy, and I am deeply indebted to all that you are always there to bless us and always there for us and provide us support whenever we need. Now is another time to thank my team of Commerce Insight magazine also. Today really is an auspicious day that Commerce Insight magazine volume 5 has been launched. I really grateful to the whole team who has worked along with me, Madam Shifali and dear Jyot Sifat Kaur of BCom Financial Service semester 3. She is now in SEM 3. Earlier she was in SEM 2 when she worked along with us as student editor. And of course, thanks to Madam Principal once again for telling us when we were designing Commerce Insight magazine. Before that, I remember on 8th April, she conducted a meeting last year, 2019. And in that meeting, she gave us certain tips that whatever is wanted in the magazine, what a magazine should look like. You know, it was my and my team's first endeavor for going through this publication process. We have read many magazines, but to create a magazine and then something like that, going ahead with that, that was the first time. And with all the tips and with all the guidance, ma'am, which you had given us in that meeting, we were able to create a small baby that is volume 5. And I hope this all will be cherished by all the students. And in this, we have also added a page for our alumni from various batches, and where they are, we have celebrated their achievements by writing down their current designation and of course also specified the batch to which they belong, so that our students know that HMVians have progressed and they are always on the top in whatever field they have chosen for themselves. So HMV is always the best, and that page will prove that of course one day you can also find your picture, your image on that, our alumni, our Pride series in the commerce section. I thank Almighty for giving us strength and pray to Almighty that please gives us strength and be a constant shoring support system for all of us in the tough times of COVID. We move ahead and live very colorful lives as we used to do earlier, moving and enjoying and celebrating each moment. And I am sure that today the things have started turning out to be positive. So the tagline of today was collect beautiful moments. And I am thankful that really we have collected beautiful moments today that we will cherish forever. So with those words, I thank once again everybody. If I have left anybody by mistake, I'm thankful to them also. And of course, in advance, let me thank Rama ma'am, because the note is going to go in press, and to Mr. Lavleesh, who is going to do the video editing of the whole program. And this video would be shared on college Facebook page also, and it would be uploaded on Commerce Club channel, YouTube channel, and the PDF form file of format file of Commerce Magazine, Commerce Insight would also be available to everybody. So
Do tell us about your suggestions so that we improve further. So with those words, I put a pause to my speech and hand it over again to Radhika. Thanks, dear all. Thank you. Thank you so much, ma'am. Really, thank you so much. It is all your love, all your support that we were able to do this program this smoothly today. Your words are like a treasure for us that we wish and we preserve it with us forever. वक्त तो पलक झपते ही गुजर जाता है. अब देखिए ना, वक्त तो पलक झपकते ही गुजर जाता है. बस ये लम्हे, ये यादें ही तो हैं जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. Now see, how quickly did this time fly? How did it start? And when it ended, I didn't really know. Though we are not sitting close to each other, but I can feel all of you present right in front of me. Because it's not the distance that shows the nearness. It's the presence of emotions, the love, the bond that we all share and we all have between us. So yes, our Navrang had all the colors in it. And yes, we collected all the beautiful moments that we could. How many did you collect? I'm pretty sure you would have tried to collect and secure all, just like me. So, our Navrang had been a very colorful event, and we assured each and every one present here that we will wear all the colors in our life and will shine and will raise high in our lives. So, ending here, thank you and have a very colorful day ahead. Thank you.